Hello and good morning to all of you. I, your coach Anupama, welcome you at the platform of SAAVAL classes for the preparation of Master Cadre English exam. And today is going to be our 8th session of the MCQs. So I hope you all are prepared, and I would like to wish you all the best for today, for all the MCQ session and for the final MCQs. Your final MCQs means your final exam whenever it happens. So all the best to all of you from my side. We are going to start with our MCQ session. So before starting with the question answers, first there is an information for all of you that हमारे जो है मास्टर केडर की प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट के जो है पेड ग्रुप्स चल रहे हैं. तो आप लोग अगर जो है इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ एनरोल योरसेल्व्स. जिस भी सब्जेक्ट में आप चाहते हैं, सब सब्जेक्ट्स के जो है मास्टर केड के पेड ग्रुप्स चल रहे हैं. और आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट दीपक सर ऑन दिस नंबर. Right, so we start with our first question for today of the MCQ series. First question is, all the four zoas in Blake's mythology stand for something. What does Hermes stand for? We have read it that there are four zoas in Blake's mythology and they stand for something. What does Hermes stand for? Love and passion, imagination, intellect and reason, or instinct and strength? Hanji, what does Hermes symbolize in the four zoas? Yes, I'm waiting for your answers, and I know you all know that, so you just have to hurry up. Yes, it is D. Very good, very well done, all of you. The answer is D. Hermes stand for instinct and strength. Second is, according to Coleridge, dash is merely the power of receiving impressions of the external world through the senses. किस imagination की बात कर रहा है Coleridge? Primary imagination या secondary imagination? किस चीज को रेफर कर रहा है वो? That dash is merely the power of receiving impressions of the external world through the senses. Is it primary imagination or secondary imagination? Yes, very well done, students. It is primary imagination. Next, we move on to question number third. And question number third is, who among the following wrote Ode to France? या फिर जिसका एक और ना मतलब जिसको बेसिकली ऐसे भी लिख दिया जाता है, France and Ode. Is it written by Shelley, Coleridge, John Keats, or Blake? Who has written Ode to France or France and Ode under the influence of French Revolution? Shelley, Coleridge, John Keats, or Blake? Yes, very good, Preeti, Raman, Jaswinder and Aryan. Yes, it is Coleridge. This ode is written by Samuel Taylor Coleridge. Yes, very good. Yes, Arzu included in lyrical ballads. Right. Then next is, I remember that I have to tell you all that which four poems by Coleridge were included in the lyrical ballads. So I will tell you soon. In Xanadu did dash. You have to fill these blanks. In Xanadu did dash a stately pleasure dome decreed, where Alph the sacred river ran through caverns measureless to man. This is pleasure. About which ruler the poet is talking in these lines, who orders this dome to be built? Is it Adonis, Don Juan, or Kublai Khan? Who ordered this pleasure dome to be built in Xanadu? Which ruler? Yes, it is Kublai Khan. So that was a very easy one. You all are already aware of it. Then we move on to question number 5. And question number 5 is, who emphasized the use of language really used by men for poetry? इनमें से किसने इस बात पे एम्फेसिस किया था कि पोइट्री की लैंग्वेज वही होनी चाहिए which is
really used by men? Is it Blake, John Keats, Coleridge, or William Wordsworth? Who emphasized the use of a simple language, the language which is used by common man in day-to-day life in poetry? Yes, it is again Wordsworth. और ये चीजें किस में मेंशन करी थी वर्ड्सवर्थ ने? प्रीफेस में मेंशन करी थी, ठीक है? प्रीफेस टू. And yes, I had to make a correction that in the last MCQ session, by mistake we marked that I marked actually, I would say, that preface is written in 1801, but it was actually published in 1800, I mean, right? तो वो correct कर लीजिएगा, वो गलत हो गया था हमारा MCQs. 1800 में ही आप लोग सही कह रहे थे, ठीक है? 1800 में ही publish जो है हुआ था, preface add किया था preface lyrical ballads में. Then question number 6 is the rhyme of the ancient mariner is about. किस चीज के बारे में है ये पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर? इज इट अबाउट अ पेरिलस एडवेंचर इन द सी? इज इट अबाउट द एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ एन ऑक्टोपस? इज इट द कर्स ऑफ सी गॉड और द गिल्ट एंड एक्सपिएशन ऑन द एंशिएंट मैरिनर? गिल्ट एंड एक्सपिएशन किसके बारे में है ये पोएम? यस, इट इज अबाउट द गिल्ट एंड एक्सपिएशन ऑन द एंशिएंट मैरिनर. उसका गिल्ट और उस गिल्ट की वजह से जो वो सफर कर रहा था, जो कर्स उसको मिला था, ठीक है? द पोएम इज ऑल अबाउट दैट. देन क्वेश्चन नंबर 7 इज द माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स इज अ फ्रेज फ्रॉम. ये फ्रेज ब्लेक की कौन सी पोएम में अपीयर होता है? इज इट लंडन, इटर्निटी, अ पॉइजन ट्री और आई आस्क्ड अ थीफ? हाँ जी, where this phrase appears? London, eternity, a poison tree, or I asked a thief? Yes, I'm waiting for the answers. I have not got the correct answers still. बच्चे, it appears in London. It appears in the poem London by William Blake. Okay, so wherever we have written things about William Blake, so just note it down there. Okay, yes. Then next is, which romantic poet coined the famous phrase spots of time? John Keats, William Wordsworth, S.T. Coleridge और लॉर्ड बायरन? किसने ये फेमस जो फ्रेज है इसको कॉइन करा था? जॉन कीट्स ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एस.टी. कोलरिज ने या लॉर्ड बायरन ने? एंड यू ऑल नो दैट आई थिंक. हाँ जी, हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. स्पॉट ऑफ टाइम. बच्चे, इट वाज वर्ड्सवर्थ. ये वर्ड कॉइन करा था, ये फ्रेज कॉइन करा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, नॉट एस.टी. कोलरिज. राइट? Then question number 9 is, which is declared as the dawn of the English Romantic movement? English Romantic movement का dawn, beginning किसको कहा जाता है? Prelude को, the excursions or the preface to lyrical ballads? हाँ जी, what is declared as the dawn of the English movement? And I think I have made you all note it down. Yes, बच्चे, it is preface to lyrical ballads, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं पोइट्री को लिखने के. ठीक है? पोइट कैसा होना चाहिए, पोइट्री कैसी होनी चाहिए? सिंपल सब्जेक्ट मैटर, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज, सिंपल थीम्स, ठीक है? तो it happens in preface to lyrical ballads, right? और prelude तो
प्रिल्यूड तो हम उसकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तो उसके साथ तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, which of these is a prophetic prose by William Blake? And I think that this is a new question for you. Prophetic prose किसको बोला जाता है विलियम ब्लेक के वर्क्स में से? French Revolution, All Religions Are One, Marriage of Heaven and Hell, A Song of Liberty. Which of these is a prophetic prose? Yes, it is Marriage of Heaven and Hell. Very good, students. You have answered it correct. It is Marriage of Heaven and Hell is considered to be the prophetic prose by William Blake. ठीक है, वैसे तो देखो कई सारे उसके विजनरी वर्क्स बोल दिए जाते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो भी है, तो उनमें भी वो कोई एक प्रोफेसी एक तरह से दे रहा है, विजन जो है दे रहा है, लेकिन इस वर्क के साथ एग्जैक्टली ये टर्म जोड़ी जाती है प्रोफेटिक प्रोज, ठीक है, क्योंकि वो सारी पोएम्स हैं, दिस इज प्रोज, ठीक है। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिक? अगेन अब आई थिंक दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू, बट आई एक्सपेक्ट दैट some of you must be aware of it. Who called Wordsworth a moral eunuch? P.B. Shelley, William Blake, Robert Southey, or Coleridge? Who referred to Wordsworth as a moral eunuch? हाँ जी. Yes. Who will answer? Yes. You're right, Sandeep. It is. Yes, Ginny, Preeti, Rama, you all are right, बच्चे. It is P.B. Shelley. P.B. Shelley ने उसको बोला था moral eunuch. और यूनिक किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर को यूनिक बोला जाता है, पर उसने उसको बोला that you are a moral one. उसको एक तरह से गाली भी दे दी, पर साथ में जिसको हम बोलते हैं ना पैराडॉक्स एक तरह से क्रिएट कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उसने एक फ्रेज में इंक्लूड कर दिए. Then next question is, who prompted Coleridge to publish Kublai Khan even if it was incomplete? किसने कोलरिज को प्रॉम्प्ट करा था कुबला खान पब्लिश करवाने के लिए, चाहे वो इनकम्प्लीट थी? रॉबर्ट साउदी, लॉर्ड बायरन और कोलरिज? Which writer? Yes, it is Lord Byron. Very good, all of you. You all know the correct answer. It is Lord Byron who encouraged Coleridge कि चाहे ये incomplete poem है, ये एक fragment है, but still get it published. And see, because it got published, we are reading it, and how famous a book, a poem it is. Who is the heroine of Christabel's Coleridge's Christabel? Coleridge की लिखी हुई poem Christabel की heroine कौन है? जेरल्डीन, क्रिस्टबेल या कार्माइला? Who is the heroine of Coleridge's Christabel? आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन का ट्विस्ट नहीं समझा. देखो, मैं क्यों पूछूंगी क्रिस्टबेल की हीरोइन क्रिस्टबेल है? हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन कोई क्यों डालेगा? नहीं डालेगा. इट मीन्स आप लोगों ने पोएम नहीं पढ़ी. So just go through it. Yes, Ginny, Aryanpreet, yes, Rajni is right, Arzu is right. Yes, see, it means you people. Yes, Raman, Sandeep, yes, it means you have read it. So it is Geraldine, not Christabel. तो ये इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए डालती रहती हूँ कि आप लोगों को ये अंदाजा रहे कि अगर किसी ने कोई इतना सीधा क्वेश्चन कोई नहीं डालेगा, ठीक है. So just go through these little things, right? What does Table Talk comprise of? A collection of Coleridge's essays, a collection of Coleridge's lectures on Shakespeare, or a collection of poems of Coleridge? Table Talk में किस चीज की कलेक्शन है? Coleridge के essays की, Coleridge's lectures on Shakespeare, or a collection of poems by Coleridge? Yes, very good. Again, you all are aware of it. It is
A collection of Coleridge's lectures on Shakespeare. Right. So we move ahead with question number 15 now. And the question number 15 is, in which year Excursions was published? In which year Excursions was published? 1812, 10, 1814 or 1816? In which year? Yes, very good. Again, you all know it very well. It is 1814. The Excursions was published in 1814. Then we move on to question number 16. Who is the writer of Milton, a poem, and Jerusalem, the Emancipation of Giant Albion? ये पूरा नाम है बच्चे इस पोएम का, ठीक है? अगर आप लोगों ने पहले नोट किया हुआ है तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन इसको पूरा ये इसके सबटाइटल के साथ नोट कर लें, ठीक है? तो यू हैव टू टेल मी इस पोएम का राइटर कौन है? पीबी शेले, विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज? हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम? Yes, very good to those who have answered William Blake. Yes, very good students. It is William Blake. This poem is written by William Blake. और प्लीज ध्यान से इसका सबटाइटल भी जो है वो नोट कर लें आप. Then we move on to question number 17. To whom Coleridge addressed in The Lime Tree Bower My Prison. इस पोएम में कोलरिज ने किसको एड्रेस करा है? चार्ल्स लैम्ब, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी और पीबी शेले? किसको एड्रेस करा है इस पोएम में कोलरिज ने? इज इट addressed to Charles Lamb, William Wordsworth, Robert Southey or P.B. Shelley? Yes, hurry up. Yes, it is addressed to the essayist Charles Lamb. Right. Next question is, from which famous Wordsworthian poem these lines are taken? वर्ड्सवर्थ की कौन सी फेमस पोएम में ये लाइंस अपीयर होती हैं? We are laid asleep in a body and become a living soul. She dwelt among untrodden ways. The green linnet, lines composed a few miles above Tinton Abbey. कौन सी पोएम में से ली गई हैं ये लाइंस? We are laid asleep in a body and become a living soul. Is it in She dwelt among untrodden ways? The green linnet? Yes. It is very good. It is lines composed a few miles above Tinton Abbey. ठीक है, जिसको सिंपली सिर्फ Tinton Abbey भी बोल दिया जाता है, but this is the complete name of this poem. Lines composed few miles above Tinton Abbey. Right? Then next question is question number 19 is, her lips were red, her looks were free, her locks were yellow as gold. Which figure of speech is used in these lines where Coleridge is referring to Death's ship? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज करी है इन लाइनों में कोलरिज ने जहां पे वो डेथ शिप को रेफर कर रहा है? Her lips were red, her looks were free, her locks were yellow as gold. Allusion, personification or euphemism? हाँ जी, it is yes, very good. It is personification. See, he is referring to a non-living thing, है ना? Non-living thing की बात कर रहा है, पर हर करके बात कर रहा है. Her lips were red, है ना? So it means he is using personification here. Yes, very well done. You all know all the things. You have learnt all the things very well. Then next question, question number 20 is, which figure of speech is used in these lines? The merry minstrelsy, the furrow followed free. कौन सा figure of speech यूज किया गया है इन लाइंस में? The merry minstrelsy, the furrow followed free. Assonance, alliteration और onomatopoeia? हाँ जी. Which figure of speech is used here? Assonance, alliteration? Yes, it is alliteration, because alliteration means repetition of consonantal sounds, right? Repetition of consonantal sounds. Consonantal sounds are repeating here.
है ना। एम एम म रिपीट हो रहा है, फ। और एसोनेंस में होता है रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स, ठीक है, जहां पे वाउल साउंड्स रिपीट हो रहे होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21, about whom Wordsworth has written the following lines in the sparrow's nest. She gave me eyes, she gave me ears. किसके बारे में बोल रहा है ये चीज वर्ड्सवर्थ इस पोएम में? मैरी हचिंसन जो कि वाइफ थी वर्ड्सवर्थ की, या डोरथी जो कि सिस्टर थी? यस, वेरी गुड आरजू, संदीप, जयरूप, गुरप्रीत। यस, इट इज डोरथी वर्ड्सवर्थ। वो अपनी सिस्टर के लिए ये लाइंस जो है लिख रहा है इस पोएम में। ओके, देन we move ahead with next question, question number 22. Which poem starts like this? My mother bore me in the southern wild and I am black. The little boy lost, the little black boy or the little boy found. Khushi, very well done बच्चे। Sometimes I miss some names, but when I say few names, it means yes, many of you have answered right. So from which poem these lines are taken? Very good. Yes, very good, Khushi. It is The Little Black Boy. Very good, all of you. Very good. It is The Little Black Boy. Right? देखो पोयम के इस लाइन से ही पता लग रहा है, and I am black. The speaker is saying, and I am black. So it appears in The Little Black Boy. Okay? So again here is an information for all of you that हमारे जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, तो यू जस्ट हैव टू टाइप योर नेम एंड मास्टर केडर सब्जेक्ट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, और आप इसे जो है इस नंबर पे भेज सकते हैं, और वहां पे आपको जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, इन एमसीक्यूज लेक्चर के लिंक्स हैं, दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो व्हाट यू हैव टू डू दैट यू जस्ट हैव टू मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको अपना नाम लिख के और सब्जेक्ट लिख के इस नंबर पे। नहीं संदीप, कितने कितने जो है आप इधर कर सकते हैं, है ना बच्चे। इट इज रिटन बाय विलियम ब्लेक। द लिटिल ब्लैक बॉय इज रिटन बाय विलियम ब्लेक। ओके, हाँ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज, in which chapter of Biographia Literaria does Coleridge make a distinction between fancy and imagination? कौन से चैप्टर में इस चीज की बात करी है ब्लेक कोलरिज ने? चैप्टर नंबर 13, 15, 11 एंड 17। 13, 15, 11 और 17। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इट इज 13th चैप्टर। और 14th में हम लोग बात कर चुके हैं, पहले किसकी करी थी? 14th चैप्टर में भी बात करी थी उन्होंने, किसी पर्टिकुलर एक थियोरी को दिया था उन्होंने। हु विल टेल मी? Yes, now question number 24 is, who is the writer of Reflections on Having Left a Place of Retirement? Who is the writer of this poem, Reflections on Having Left a Place of Retirement? Wordsworth, Coleridge और Blake? Yes, it is Willing Suspension of Disbelief. Right, रजनी, आप एक वर्ड भूल गए बस। Yes, very good, Gurmeet. It is by William Blake. It is written by William Blake. Yes. Reflections on Having Left a Place of Retirement. Then, question number 25 is, from which poem of Wordsworth George Eliot takes the epigraph of his novel Silas Marner? Silas Marner. वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से
जॉर्ज इलियट ने एपिग्राफ लिया? द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर, द लीच गैदरर और माइकल? हाँ जी. Is it by are you sure, Arzu? Because I too had a confusion. ओके सो ठीक है. आप लोग अभी करेक्ट कर लीजिए ये वाला कि ये जो ऊपर वाली पोएम है इट इज रिटन बाय कोलरिज. इट इज रिटन बाय कोलरिज, राइट? द पोएम reflections on having left a place of retirement. Okay, just note it down. Mistakenly. ठीक है? Okay. Then next is, from which poem of Wordsworth George Eliot takes the epigraph of his novel Silas Marner? The Old Cumberland Beggar, the Leech Gatherer or Michael? हाँ जी. From which poem of Wordsworth George Eliot has taken the epigraph? Yes, it is Michael. Very good, all of you. It is Michael. Then question number 26. What is the subtitle of The White Doe of Lystone? The Fate of Nortons, The Destiny of Nortons or The Age of Nortons? And we all remember that this poem, जिसका जो theme है हमने पहले पढ़ा है कि it is almost similar to Hind and the Panther, है ना, by Dryden. So इस poem का subtitle क्या है? Yes, it is Fate of the Nortons. Very good, Arzu. And thank you so much for correcting me. Like sometimes हो जाती है confusion, है ना? Okay. Then question number 27 is, Wordsworth took inspiration from Gray's poem for writing a poem. Wordsworth ने थॉमस ग्रे की एक पोएम से इंस्पिरेशन ली एक पोएम लिखने के लिए. You have to name both the poems respectively written by Gray as well as Wordsworth. Ode to Intimations of Immortality by Wordsworth, Ode to Duty by Wordsworth, and Hymn to Adversity by Gray. Or the third one is, the third option is Resolution and Independence by Wordsworth or Hymn to Adversity by Gray. Which is the right one? कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की है और कौन सी ग्रे की जिससे इंस्पिरेशन ली थी वर्ड्सवर्थ ने? हाँ जी, जिससे इंस्पिरेशन ली थी वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखने के लिए. यस यस प्रीति, यू आर राइट. इट इज ओड टू ड्यूटी बाय वर्ड्सवर्थ और ग्रे की है हिम टू एडवर्सिटी. ठीक है, इट इज हिम टू एडवर्सिटी बाय थॉमस ग्रे, जहां से वर्ड्सवर्थ ने इंस्पिरेशन ली थी अपनी पोएम ओड टू ड्यूटी लिखने के लिए. राइट? सो you can note this thing down if you have not noted or you it was not discussed in the notes earlier. Then question number 28 is, who inspired the early poems of S.T. Coleridge? S.T. Coleridge की शुरू वाली poems वो किससे inspired थे? Collins and Byron, Gray and Shelley, या Collins and Gray, या Collins and Chaucer? By whom Coleridge was inspired? Collins and Byron, Collins and Shelley, Gray and Shelley, Collins and Gray. हाँ जी, it is Collins and Gray. Right? It is Collins and Gray. Very good. Blake started writing The Marriage of Heaven and Hell in 1790 and completed it in 1793, 1792, 91 or 95?
उसने शुरू किया मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल लिखना 1790 में, पर कंप्लीट कब किया? 93 में, 92 में, 71 में? Yes, very good. He completed it in 93. Very good. Question number 30. The title of The Marriage of Heaven and Hell is an ironic reference to heaven and hell. Who is the writer of Heaven and Hell? एक अकेला वर्क है हेवन एंड हेल, वो किसका लिखा हुआ है? जहां से जो है जिस टाइटल उठाया ब्लेक ने अपनी जो है प्रोफेटिक प्रोज का, स्वाडनबर्ग, इज इट स्वीडनबर्ग और इट इज स्वीडनबॉर्ग? Who is the one from who wrote the Heaven and Hell, from which the title was taken by William Blake? हाँ जी, जरा जरा सा फर्क रखा है, देखो मैंने नाम के स्पेलिंग्स में, इट इज स्वाडनबर्ग, इट इज स्वीडनबर्ग और इट इज स्वीडनबॉर्ग। हाँ जी, कंफर्म इट। मुझे तो लग रहा है कि स्वीडनबॉर्ग है, एंड में बॉर्ग आता है, आई थिंक सो। हाँ जी, कौन बताएगा श्योरिटी के साथ कि स्वाडनबर्ग है कि स्वीडनबॉर्ग है? हाँ जी, who will tell this with surety? I'm waiting for the answer. Okay, it is स्वाडनबर्ग, राइट। ठीक है, बस इतना इतना सा फर्क देखो डाला है, उसी से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इट इज स्वाडनबर्ग, नॉट स्वीडनबॉर्ग। ओके, then question number 31 is, what is the complete title of Biographia Literaria? Biographia Literaria, biographical sketches. Here complete is बच्चे biographical sketches of my literary life and career, biographical sketches of my literary life and opinions, or biographical drawings of my literary life and career. What is the complete title of Biographia Literaria? Yes, it is biographical sketches of my literary life and opinions. That is the only difference. Rajni, I will check again also, बच्चे। ठीक है, I will check it again if it is Swedenborg or it is Swedenborg. मैंने पहले भी 2 बार चेक किया क्वेश्चन डालते हुए, बट स्टिल इट ऐसे ऑप्शंस डाल दिए मैंने कि अब खुद ही कंफ्यूज हो गई। ठीक है, biographical sketches of my literary life and opinions. Then question number 32. Where do this line appears? Did he made the lamb make thee? Did he who made the lamb make thee? The tiger, the lamb, the shepherd. किस पोएम में ये लाइंस आती हैं? Did he who made the lamb make thee? It appears in, yes, it appears in The Tiger. And by whom these poems are written? By Blake. क्योंकि इस पोएम में ब्लेक बेसिकली बात कर रहा है कि हैरानी होती है ये देख के, भगवान की क्रिएशन को देख के, कि कैसे कैसे कितना कितना कुछ भगवान ने क्रिएट करा है, कहाँ से उसको जो है आइडियाज आए होंगे इस चीज को लेके कि उसी ने इतना एक इनोसेंट सा एनिमल बनाया, ठीक है, और उसी ने जो है एक इतना जो है खूंखार टाइप का एनिमल, वायलेंट एनिमल जो है बनाया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, which of these is not a visionary poem by William Blake? The first book of Urizen, the book of Ahania, the Song of Laws, or the Auguries of Innocence? Which of these is not a visionary poem? Is not, again I'm saying, is not a visionary poem by William Blake.
The first book of Urizen, the book of Fahania, the song of laws, or auguries of innocence? Yes, it is. It is. Let the answers come. It is auguries of innocence, बच्चे. It is auguries of innocence. ये जो तकरीबन जिनमें ये बुक वर्ड आ रहा है ना, बुक ऑफ यूरिजन, बुक ऑफ लॉज, सॉन्ग ऑफ लॉज, ये उसकी विजनरी बुक्स हैं. ठीक है, तो ये याद रखने का आसान तरीका है. ऑगरीज ऑफ इनोसेंस इज नॉट इन हिज विजनरी बुक्स. ओके, देन नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक इन द लाइन टेकन फ्रॉम कुबला खान. जहां पे नॉट आ जाता है वहां पे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे लिए, है ना. जहां पे आ जाता है विच ऑफ दीज इज अ विजनरी, वहां पे गेस करना बहुत आसान है. देन नेक्स्ट इज fill in the blank in the line taken from Kublai Khan, where dash the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless dash. आपको ये blanks fill करनी है. Where dash the sacred river ran. ठीक है, कौन सी रिवर का नाम आता है इस पोएम कुबला खान में? Through caverns measureless to man, down to sunless dash. Alps, sky. ठीक है, एल्प्स या सी और एल्फ या सी. यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स. इट इज, यस, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग इट राइट. इट इज ऑप्शन सी, वेयर एल्फ. ठीक है, रिवर का नाम आता है एल्फ, और जब बात करता है कि वो एल्फ रिवर, इट रैन थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस, वो जा रही है गुफाओं में से अपना रास्ता बनाते हुए, डाउन टू अ सनलेस सी. क्योंकि नदी कहां जाएगी? स्काई में नहीं जाएगी, समंदर में जाएगी. ठीक है, तो अगर ऐसे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मान लो रिवर का नाम नहीं पता है, तो पोएम की लाइन को थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ लेना है. दैट वेयर द सेक्रेड रिवर विल गो, इट विल गो टू द सनलेस सी. ठीक है, नदियां समंदर में जाके ही मिलती हैं. Then question number 35 is, of which Wordsworthian poem these lines make a part? Little we see in nature that is ours, we have given our hearts away a sordid boon. In which poem these lines make a part? Little we see in nature that is ours, we have given our hearts away a sordid boon. I wandered lonely as a cloud, the world is too much with us, or London 1802. हाँ जी, which is the right answer? Wandered lonely as a cloud, the world is too much with us, or London 1802. Yes, very good. It means you all have read the poem. Very good. It is 18. It is the world is too much with us. Right? इसीलिए मैं कहती रहती हूँ, कुछ लाइनें मैं आप लोगों को लिखवाती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी पोएम्स को पढ़ लिया कीजिए. ठीक है, जो ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, तो बड़ा आइडिया हो जाएगा हर चीज के बारे में. देन क्वेश्चन नंबर 36 we move on to. From which famous poem, a part of the lyrical ballads, these lines are taken? He prayeth best who loveth best, all things both great and small, for the dear God who loveth has he made and loveth all. The speaker is saying, he prayeth best who loveth best, कि जो लव करता ना सबको, ठीक है, बिना भेदभाव करे कि ये क्रीचर गंदे हैं, ये क्रीचर अच्छे हैं. ठीक है, उस इट मीन्स वो प्रे कर रहा है भगवान को. ठीक है, चाहे वो बड़ी चीजें, चाहे वो छोटी, चाहे वो सुंदर लगती है देखने में जानवर, ठीक है, क्रीचर्स, या कोई सुंदर नहीं लगते हैं. फॉर द डियर गॉड हु लवेथ अस ही मेड एंड लवेथ ऑल. क्योंकि जिस भगवान ने हमें बनाया वो भी हम सबको इक्वली प्यार करता है बिना भेदभाव के, क्योंकि वो सब क्रीचर्स उसने बनाए. Is it taken from Frost at Midnight, Christabel, Rime of the Ancient Mariner, Kublai Khan? It is taken from the very, oh yes, very good. These are almost the last lines of Rime of the Ancient Mariner. क्योंकि गिल्ट की बात है, देखो अगेन यहाँ पे भी लाइंस को आपने रिलेट करना है कि ये किस चीज के बारे में बोल सकता है स्पीकर. इट इज टेकन फ्रॉम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. ठीक है, तो
जब वो अपनी गिल्ट रियलाइज करता है तब वो रियलाइज करता है, ठीक है। जब वो अकेला रह जाता है शिप पे और वो सारे क्रीचर्स जिनको वो नफरत से देख रहा था, एल्बेट्रॉस को वो मार देता है, ठीक है, और फिर वही क्रीचर्स को वो बड़े प्यार से देखना शुरू कर देता है, वो उसकी लोनलीनेस को खत्म करते हैं, ठीक है। तब वो रियलाइज करता है कि किसी को भी हक नहीं है नफरत करने का दूसरे क्रीचर्स को, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। ओके, यस, राइट, वेरी राइट सोनम। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द राइटर ऑफ टू ऑटम? बच्चे रीड इट क्लियरली, आई हैव नॉट रिटन ओड टू ऑटम, इट इज टू ऑटम। जॉन कीट्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और पीबी शेले? Is it written by John Keats, William Blake, William Wordsworth or P.B. Shelley? Who is the writer of To Autumn? बच्चे, it is William Blake. To Autumn is written by William Blake. Either it is Ode to Autumn, which is written by John Keats, but To Autumn is written by William Blake. Okay, check your notes clearly. Yes. Then question number 38. What form of a poem the solitary reaper is? What form of a poem the solitary reaper is? Lyric, sonnet, ballad और epic? हाँ जी, किस फॉर्म की लिखी हुई है solitary reaper? Lyric, sonnet, ballad और epic? हाँ जी आरजू, तो जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, इफ इट इज न्यू तो नोट कर लो अपने नोट्स में, है ना? यस, इट इज अ बैलेड, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 39 इज, व्हाट इज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस? 1789। ये एक तो अलग अलग थे बच्चे, अकेले सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और अकेले सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये कॉम्बिनेशन वाली बुक कब पब्लिश हुई थी? 1789 में, 94, 93 और 95? हाँ जी, व्हेन वाज दिस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस पब्लिश्ड? इट वाज पब्लिश्ड इन 1789। इट वाज पब्लिश्ड इन 1789 बच्चे, वो अलग अलग थे। यस रूही, यू आर राइट बच्चे, मैंने इसीलिए पहले बोला कि वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस अलग और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस अलग, ये इकट्ठे वाले जो पब्लिश हुए थे, they were published in 1789. Okay, then the last question for today is, these are the beginning lines of a very famous poem by William Blake. When my mother died, I was very young, and my mother sold me, while yet my tongue could scarcely cry. The chimney sweeper or infant joy? हाँ जी, किस पोएम में ये स्टार्टिंग लाइंस है विलियम ब्लेक की? किस पोएम की? वेयर द स्पीकर इज सेइंग दैट he couldn't even realized he was very young when his mother died, और उसको रोना भी नहीं आता था। yes, it is the beginning of the chimney sweeper. Okay, so that is it for today. These were the questions of the MCQ session today. और कल के सेशन के लिए आप लोगों को ऑलरेडी जो है यू मस्ट हैव गॉट द मैसेज, शेली, बायरन और जॉन कीट्स के एमसीक्यूज प्रिपेयर करके रखने हैं आपको, ठीक है। उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज कल प्रैक्टिस करेंगे। So thank you for today. Keep preparing well and all the best to all of you.